हेलो माय डियर स्टूडेंट्स संडे एकेडमी को आपण मान को बहुत स्वागत। आज आम डिस्कसन करबा आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी रे जो सब एनटीपीसी रो जो सब हिस्ट्री रो क्वेश्चन सेटा को बारंबार रिपीट होची आ सेटा सब प्रायतः जेबे देखिबे को परीक्षा रे पडुची निश्चित पडुची से क्वेश्चन आम डिस्कसन करबा जोटा कि आम ना देचु प्रीवियस ईयर बिट्स। ठीक अछि तनो स्टार्ट करबा। आम आज टिके रैपिड फायर टाइम स्टार्ट करबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉयज appointed the Hunter Commission in 1882 ये क्वेश्चन आपण को मान को मो लास्ट वीडियो देथिली आपण माने आपको कहतली जे टिके आंसर को कमेंट सेक्शन देबे तनो जो माने देइछन ताको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जदि आपण मान आंसर ठीक अछि तला हम गुटे हार्ट आपण को दे देबो आपण आंसर हार्ट उड दे देबो आपण माने आंसर जानि परिबे आपण को ठीक अछि ने तनो चलो त क्वेश्चन डिस्कशन करबा कोन हबो तनो क्वेश्चन डिस्कशन करला बेलको ये आंसर होछि आपण को ऑप्शन डी कोन ऑप्शन डी द हंटर कमीशन ऑफ 1882 was presided by Sir William Hunter and was appointed by Lord Ripon, the Viceroy of India. The Hunter Commission was constituted on 3rd April 1882 after a request of the General Council of Education was made to Ripon. बुझ पाइले क्वेश्चन बहुत बड़ी पड़े परीक्षा रे। सेकंड क्वेश्चन देखिबा तो सती प्रथा वाज abolished under the Governor Generalship of का द्वारा तेणु ऑप्शन अच्छी आपण माने टिक आंसर करियो चेष्टा करंतु दुटा ऑप्शन आपण इंपोर्टेंट जोडे जानि चंदी सेटा होची लॉर्ड विलियम बेंटिंग आ मेट कैफे। ठीक अछि तेणु टिक आंसर देखिबा आंसर अब आपण को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ऊपरटा ऑप्शन रे एते ये नाही कि आपण माने दुटा जो ऑप्शन अच्छी लॉर्ड ए एंड बी एलिमिनेशन करबे एते तांकर किछि अवदान नाही। ठीक अछि तेणु दुटा जानले भलो रे आपण आंसर करि परिबे। देखो कौन देची द सती प्रथा वाज abolished under the governor generalship of Lord William Bentinck. The sati pratha was abolished in 1829. He had worked for the upliftment of the women's position in society. ठीक अछि ये होची पूरा डिटेल जिंसटा एक्सप्लेनेशन करदेली। Next, who was the Governor General of Bengal when the permanent settlement was introduced there in 1793? Option A Warren Hastings, Sir John Surrey, John Macpherson, Lord Cornwallis आर आंसर अब आपनकर लॉर्ड कॉर्नवालिस केमती ना लॉर्ड Cornwallis was the Governor General of India when the Permanent Settlement Act was introduced. It was introduced in 1793 CE. Okay, next question देखिबा who among the following is popularly known as the father of civil services in India? एटा बहुत थर पढिछि परीक्षा रे तेनु हमें टिके जदी हमें बही पढिथिबा निश्चित भाबे दीटा ऑप्शन को हमें टिके जानि परिबा लॉर्ड कॉर्नवालिस और वारेन हेस्टिंग हेते पारे तो आंसर कोन हो आंसर हो लॉर्ड कॉर्नवालिस केमती Warren Hastings is credited for laying the foundations of the civil services in India while it was Charles Cornwallis who reformed and modernized the inner working of the civil services. For his efforts, Charles Cornwallis is known as the father of civil services in India. मुझ पहले आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा who was the first governor general of British India in from 1773 to 1785? ठीक अछि ऑप्शन अछि सर जॉन सरे वारेन हेस्टिंग लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड वेलेस्ली ऑप्शन नंबर वारेन हेस्टिंग्स Warren Hastings was the first Governor General of India from 1773 to 1785. ठीक अछि तापर क्वेश्चन नंबर 6 द डैश was a group of 7 members of parliament from the United Kingdom constituted to suggest constitutional reform for British India. ऑप्शन नेला फार्सर कमीशन हंटर कमीशन सर्गेंट कमीशन साइमन कमीशन। ठीक अछि ऑप्शन आपण हबा साइमन कमीशन अब कहीं हबा आंसर साइमन कमीशन the Indian Statutory Commission also known as for the Simon Commission was a group of the 7 members of the British Parliament under the chairmanship of Sir John Simon. The Simon Commission arrived in Indian subcontinent in 1928 to study the constitutional reform in British India. which पहले Second number question, which of the following was the most important characteristic of India's trade throughout the colonial
पीरियड कौन होता है इंपोर्ट सरप्लस हो पारे इंपोर्ट डेफिशिएंसी हो पारे एक्सपोर्ट डेफिशिएंसी हो पारे एक्सपोर्ट सरप्लस हो पारे कौन हो पारे आंसर हम डी एक्सपोर्ट सरप्लस देला किंती A major trade characteristic of a trade in the colonial period of India was its export surplus. Which पहले an export surplus is when a country export more product than it imports from the other countries. एक्सपोर्ट माने कौन एक्सपोर्ट माने ताको आमे पठेबा इंपोर्ट माने आनिबा ठीक अच्छे तेणु आम एक्सपोर्ट अधिका करूँ एक्सपोर्ट बहुत जिन आम इंडिया भारत बहुत जिन पठाऊलु जोटा कि अन्य देश को रिक्वायरमेंट था एवं इंपोर्ट कम करूँ अदर कंट्री ठीक अच्छे तापर 8 नंबर क्वेश्चन आज ए रिएक्शन टू द रॉबर्ट एक्ट डैश वाज ऑर्गेनाइज्ड एज नेशनल ह्यूमिलिएशन डे तेणु ये आपन चार्ट ऑप्शन देछि आपन माने आंसर कोंतु टाइम ड्यूरेशन चलछि चलो आंसर देखिबा हो आंसर हो 6th April 1990 किमती throughout the country 6th April 1919 was observed as the National Humanitarian Day. Indian Council Act of 1909 is also known as the Morley-Minto Reform. ठीक है During the passage of the Royal Tiles Act 1876, the office of the British Prime Minister was occupied by William Ewart Gladstone, Arthur Balfour, John Russell, Benjamin Disraeli. Our option answer of D. Benjamin Disraeli. The Royal Titles Act 1876 was an act of the Parliament of the United Kingdom which officially recognized Queen Victoria and subsequent monarchs as the Empress of India. This title had been assumed by her in 1876 under the encouragement of the Prime Minister Benjamin Disraeli. This act officially recognized Queen Victoria as Empress of India. तो मन रखता तो बहुत important question था. Next question: in which year the administration of India was transferred into the hands of the British monarch by the proclamation of Queen Victoria? तेणु ऑप्शन अच्छी है 1887, 1842, 1864, 1858. Answer of 1858. On August 2, 1858, less than a month after the Canning proclaimed the Viceroy of British arms, Parliament passed the Government of India Act transferring British power over the India from the East India Company, whose ineptitude was primarily blamed for the mutiny to the crown. ठीक अच्छे अच्छा पिला माने आपण माने सिविल सर्विस में प्रिपेयर करछन कि आ तो डेडिकेशन जदी करछन त निश्चित भाबरे आमे हमर जो सन एकेडमी रो आईएएस बैच अछि आ जोथरे कि हमर ड्यूरेशन 1 ईयर रहइबो फिल्म्स मेंस इंटरव्यू रो सब टोटल पैकेज अछि तण आपण मान को जदी या विषय किछि जानिया अछि निश्चित भाबरे आपण ऊपर देखा नंबर को कांटेक्ट करिवे आ डिटेल बुझ परिवे कोर्स से कोन अछि को टीचर माने पढौछथि कोन कोन आपण मान को डिटेल ले मिलिबो तापर आसिला आपण माने जदी डेडिकेटली ओडिशा गवर्नमेंट सहित प्रिपरेशन ओडिशा गवर्नमेंट रो सब जॉब पे प्रिपरेशन करछथि आ ता सहित आपण एमपी जे आपण एसएससी रे आपण इंस्पेक्टर हवा पई तले एसएससी रो एसएससी ओएसएससी एवं ओ ट्रिपल एसएस गोटा हाइब्रिड बैच मध्ये हम पाखरा अवेलेबल अछि तेणु जोटा कि ड्यूरेशन 6 मंथ रहबो आपण हाइब्रिड बैच रे आपणकर पूरा ऑल ओवर आपणकर ओडिशा रो पूरा प्रिपरेशन हे जिवो एवं ता सहित एसएससी जो सेंट्रल लेवल अछि ता सहित तार भी प्रिपरेशन हे जिवो ता विषय जदि आपण डिटेल जानि अछि निश्चित नंबर ओपन देता नंबर कांटेक्ट करिवे ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट टाइम जिबा क्वेश्चन तो द फर्स्ट complete census in India was held in the year dash केबे हेतला 1881 1873 1891 1885
आंसर हम 1881 ହେଇଥିଲା କେମିତି ନା in India the first census was held in the year 1872. The first complete census however was taken in the year 1881. Since then census have been held regularly every 10th year. The Indian census is the most comprehensive source of demographic, social and economic data about India. ବୁଝିପାରିଲେ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन ମୁଁ କହିଦେଇଛି. Next question. In pre-independent India, the British moved the capital of India from Kolkata to Delhi in dash. এটা বহুত থর क्वेश्चन পড়ে कोलकाता to Delhi কেবে ट्रांसफर ହେଲା 1911 1921 1924 1913 आंसर होगा 1911 ହେଲା ଏମିତି during the Delhi Darbar on 12th December 1911 George V, then Emperor of the India, along with the Queen, made the announcement that capital of India shifted from Kolkata to Delhi, while laying the foundation stone of capital India in Coronation Park. ଏଠି ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ପର୍ସ ମାରିକି ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ଅଛି ଡିଟେଲ. ଆମକୁ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଇଏ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାର ନାହିଁ. ହିଷ୍ଟ୍ରି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ବଟ୍ ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ତାକୁ ଖାଲି ଜାଣିବାର ଅଛି. ଠିକ୍ ଅଛି. ନେକ୍ସଟ ଯିବା. India was divided into India and Pakistan by the Dash Act. এটা ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଛି. ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ, division of India, partition of India, India independence. Answer ହେବ D, India independence. କେମିତି? The partition of India was mentioned in the Mountbatten Plan. It was also known as the Indian Independence Act 1947 and was put forward by the Lord Mountbatten on the June 3rd 1947. It resulted in the creation of two independent dominions, India and Pakistan. Next question jiba. The Dash Commission was set up to investigate the Jallianwala Massacre. Hunter Commission, Bolter Commission, Salter Commission, Campbell Commission. कौन होता है पारे? आंसर अब आपनकर है Hunter Commission. Hunter Commission ଦେଇଛି. After the terrible massacre at Jallianwala on the 13th April 1919, the Legislative Council of the Government of India constituted the Hunter Commission to examine the mishap that occurred there. Next question. The Jallianwala Massacre, also known as the Amritsar Massacre, took place in Jallianwala, Amritsar, Punjab on dash. ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆନ୍ସର୍. ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି ସେଇ ଭିତରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ. ପିଲାମାନେ ଟାଇମ୍ ସରିଗଲାଣି. ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏ 13 ଏପ୍ରିଲ 1990. କେମିତି ନା on 13 April 1990, British troops under the command of General Regent Dyer fired on a crowd of unarmed civilians in Amritsar. Following Gandhiji's call for the resistance and a one-day general strike earlier that was protested and had broken out across the country, particularly in Punjab. Next question ଆସିଲା. Which act is also as Montagu Chelmsford reform? कोटा हमारा को act टाको हमें Montagu Chelmsford act भी कहूँ. क्योंकि Indian Independence Act 1947, Indian Government Act 1990, Pitt's India Act 1784, Charter Act 1830. कोटा ही पर आंसर. अब आंसर अब B, Indian Government Act 1990. Answer the correct answer is the Government of India Act 1990. Government of India Act, also known as the Montagu Chelmsford reforms. The Government of India Act 1990 was based on the recommendation of a report by the Edwin Montagu, the Secretary of the State of India, and Lord Chelmsford. Next question deva. Which act of the British Parliament transferred the powers of the East India Company to the British Crown? Charter Act 1853, Charter Act 1835, Government of India Act 1858, Charter Act 1880. And answer was C, Government of India Act 1858. The act that transferred the power from the British East India Company to the British Crown in India was Government
of India Act 1858. This was an act passed by the British Parliament on 2nd August 1858. ठीक है. In which province of British India was royalty system implemented to collect revenue? North India, South India, Western India or Eastern India? से होची आपनकर South India. This system of land revenue was instituted in the late 18th century by Sir Thomas Monro, Governor of Madras in 1820. This was practiced in the Madras and the Bombay areas as well as the Assam and Coorg provinces. Coorg province को थिला अपन साउथ थिला. In this system, the peasants of cultivator were regarded as the owners of the land. ठीक है. Next question: Who had given the doctrine of lapse? Lord Cornwallis, Bentinck, Dalhousie or Canning? Answer of आपण C Dalhousie. कौन लीजिए? Lord Dalhousie Doctrine of Lapse in India History formula devised by the Lord Dalhousie, Governor General of India, 1848 to 1846, to deal with the questions of succession of Hindu-Indian states. सब स्टेट. Next question, by last question, Indian Statutory Commission 1928 was headed by Daniel Radcliffe, Viceroy Lord Irwin, Sir John Simon, Viceroy Lord Chelmsford. Answer of Sir John Simon. The Indian Statutory Commission was also known as the Simon Commission, was a group of 7 members of the British Parliament under the chairmanship of Sir John Simon. The commission arrived in the Indian subcontinent in 1928 to study the constitutional reform in the British India. ठीक अच्छी पिला माने तेणु आज आम गोटे जो अनाउंसमेंट करूँ टे शुणा चेष्टा करेंगे. आम संडे एकाडेमी जो अच्छी आपणकर आईएएस एवं ओएस बैच जोटा कि ड्यूरेशन रोचे 1 ईयर, प्रिलिम्स मेन्स इंटरव्यू रोचे से सब जगह भल भल फैकल्टी अच्छा थे आप कल करूँ डिटेल जाना चेष्टा करूँ केमी कौन क्लासेस होची विषय आप आइडिया पाइबे. जहाँ डाउट थे आप द्वितीय नंबर कल करेंगे. आज आप केवल ओडार जिते सब आसूची एग्जाम जोटा कि एसएससी ओएसएससी ट्रिपल एसएससी जो मैंने कर गोटे हार्टबीट बेड़ा भी अवेलेबल अच्छी जो कि ड्यूरेशन 6 मंथ दूसरी जो कि आपण एसएससी जोटा कि सेंट्रल ओएसएससी एवं ओ ट्रिपल एसएससी जोटा कि स्टेट गवर्नमेंट ये दुटार जो पैरेलली प्रिपरेशन करूँ जोटा कि 6 मंथ ड्यूरेशन रहा जोटा कि आपंकर आगक आसूवा जो वैकेंसी गुड़ाक आपण मैंने क्रैक करेंगे. ठीक अच्छे. आज आम क्वेश्चन ऑफ द डे रे आपण गोटे क्वेश्चन दौचु आपण मैंने यार आंसर को ट्राए करेंगे. कमेंट सेक्शन आंसर देवे जो मैंने आंसर देवे आम आपण मान गोटे हार्ट सिंबल देव आप जानीपारे जे आपण मान आंसर ठीक अच्छे. आम Which British official was responsible for the Jallianwala Massacre? General Dyer, General Irwin, General Clive or General Sanders? ठीक अच्छे. आपण मैंने भिडियोटी देखी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स फॉर वाचिंग. आउ पिला माने प्लीज जदि आप कंटेंट भल लगे लाइक शेयर कमेंट करेंगे. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.